Good morning, everyone, and welcome to the stream of humanities. I would like to tell you that humanities, why we call this stream as humanities, because the center of this stream is human being. We do not deal with the matter as we see in case of science. The subject or the stream of science, the main focus, or we can say the center of this science is matter. Okay, and everything can be predicted about the matters, है ना. किस मैटर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, किसके साथ क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एवरीथिंग कैन बी predicted. Exceptions होते हैं, but everything can be predicted. This is science. But here, when you are in humanities, you must understand that our subject matter is human being. Okay, so this human being is actually, we can say, is the behavior of human being is totally unpredictable. We cannot predict the behavior of human being, है ना. किस सिचुएशन में एक ह्यूमन का क्या बिहेवियर होगा, क्या रिएक्शन होगा, you can never predict, because there are so many factors which determine our reaction, and these factors are not something which can be defined, है ना. So this is very much important for us to understand that humanities is a stream which needs to be studied with your you can say with your emotions, with your heart. You don't need a very high level of mental intelligence, we can say, in order to understand the subject, but you need to be emotionally, you need to be very much sensitive towards the human being, towards the various situations and all. So this is the stream which you have chosen, and I can say you that this by studying this stream, by studying various subjects under this stream, you really will become a more responsible, more sensitive citizens of the country, which is very much required by the country. And all the social problems which we face in today's world are because of this attitude of the general people, that the humanities are not, the study of humanities is not important. The stream of humanities is neglected. Yes, I know, we understand this. It is happening in our country. That this social science or this humanities is not given proper place in the academics. Why? Because it is considered it has no use. But actually, I can tell you, whatever problems we are facing in society, all these problems can be rooted out only with the help of the study of this stream of humanities. Economy is very important, but when society does not support anything, when society does not support the political system or the economic system, then it becomes useless. And so it is very much important to understand. So now I just come to my subject, our subject. The subject is political science. So political science, it deals with the political system of the country, not only the political system, but the different political theories and ideologies are also
important under this subject. In the previous classes up to class 10th you have studied civics है ना under social science. So that civics, actually we can say the civics bifurcate into two parts. One is political science and the other is sociology. Okay, one is political science and the other is sociology. So this is the bifurcation. Okay, now we are concerned with political science. आपको याद होगा जब आप civics पढ़ते थे तो उसमें दोनों तरह के कंटेंट होते थे, कुछ जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए एंड कुछ जो हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए. तो सोसाइटी से जो कंटेंट थे दैट कम्स अंडर सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल सिस्टम से के जो कंटेंट थे दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल साइंस. ओके, एंड नाउ वी सी क्लास 11th में आपने ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है. तो इसके अंदर आपको 2 बुक पढ़ने. यू हैव टू स्टडी 2 बुक्स. The first book is Constitution at Work. The name of the book is Indian Constitution at Work. Indian Constitution at Work. Okay, and now we see the second book. This is your first book, and the second book is Political Theory. Okay, so first of all I will give a brief introduction. क्या है इस बुक के अंदर, आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद we will start with the first chapter. Okay, so the Indian Constitution at Work, you can understand from the words of this book only that you have to study the Constitution, है ना, the Constitution of India. What are the provisions regarding different जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्या क्या provisions हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. यू हैव टू स्टडी दैट, है ना, लाइक जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म, ये सब के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं. ओनली यू हैव टू स्टडी दिस कि प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के. सो इन शॉर्ट वी कैन से यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कंटेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली बहुत नहीं देखना है हमें कि एक्चुअली कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर, लाइक दिस क्लास 12th, वो आपके क्लास 12th में जाएगा. यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में देखना है. लाइक अगर आप अपने बुक के डिफरेंट चैप्टर्स को एक बार अगर नज़र डालते हैं तो व्हाट यू सी दैट द चैप्टर्स, द कंटेंट इज़ एक्चुअली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन की. कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं. लाइक योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ. तो इट विल टेल यू अबाउट the need of the constitution and how our constitution came into effect. Then the second chapter is rights in the Indian constitution. What are the fundamental rights are given to us by the constitution. That is completely बहुत ही interesting chapter है, वो पूरा स्टडी है आपका. Then the third chapter is about election and representation. Then you have to read about what is the system of election has been adopted in our country, what are the different types of systems of election, what are their merits, demerits, then election commission, everything, how the election is conducted, everything is under this chapter. Then executive is there. In this we will see what does the executive do, how the executive is formed, everything, what are the powers of the executive. And then legislature, composition of legislature, its different powers and functions, everything will be done.
एंड देन जुडिशरी में भी आपको वही सब करना है. जुडिशरी का कैसे स्ट्रक्चर है, जुडिशरी की नीड क्या है, ये सारी चीज़ें, उसके क्या पावर्स हैं, फंक्शन है, एवरीथिंग. एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स, जो हमारे डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है, 3rd लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में, जिसके बारे में आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा है ना, जूनियर क्लासेस में ये सब चीज़ें. बट हम लोग इसको एकदम स्टार्टिंग से करेंगे. इसी तरह से एक चैप्टर है फेडरलिज्म, जिसमें कि हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. देन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. And the last is the philosophy of the constitution. What is the philosophy on which the constitution is based? Here you must understand that this ये जो आपका बुक है, इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं, है ना, रिवाइज्ड हो गए हैं. तो जो भी चेंजेस हैं उसको हम लोग साथ साथ में बताते जाएंगे. Or I will send you a PDF also, in which you will, through which you will become aware of the changes in the syllabus. So this is your first book, Indian Constitution and at Work. And now we will see what is in the second book, that is Political Theory. So in the first chapter you will read about political theory. What is political theory? What is the need of political theory? Why do we study political theory? What are its utility and all? Then in the next chapter you will know about this ideal of freedom. What is freedom? Different aspects of freedom, need of freedom, what are the constraints on freedom? All these will be discussed. So this is your theory part, which forms the base of the subject. So it is very much important to understand. Many times it happens that the students do not have interest in this book, the content of the book. Somehow कुछ लोगों को ऐसा होता है, but this is not the correct way. ये बहुत ही important है और interesting भी है if you understand the content. अगर आप कंटेंट को समझेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल ऑल्सो. इट इज़ यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ. यू विल एक्सपीरियंस इट्स यूज इन योर डे टू डे लाइफ. इफ फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, देन यू विल फाइंड जो छोटी छोटी बातें जिस पे आप शायद पहले नहीं ध्यान देते होंगे. अगर इस बुक में जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद आप यू विल बिकम सेंसिटिव. दैट इज़ द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि इंसान को सेंसिटिव बनाना, ताकि वो दूसरों के नीड्स को समझ सके, हार्मनी में रह सके, है ना. दिस इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी. तो दिस इज इन दैट वे दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दिस पेपर, the political theory. So the second chapter is about freedom, the third is about equality and all. You will read about the ideology of equality. Then social justice will also be discussed. Rights are there, ki how rights are important for us, what are the different types of rights, why we need rights, है ना. And then there is citizenship. Why do we need citizenship? What are the benefits we get by becoming a citizen of any country? And everything about citizenship will be discussed under this chapter. Then nationalism is also there. What do we mean by nation? What do we mean by nationalism? What are the factors which are responsible for nationalism? Then secularism is also there. Then secularism is there, in which the concept of secularism will be made you to understand. Then the main what are the main objectives of Indian secularism, what is the difference between Indian and Western secularism, everything will be discussed. And then peace is there, in which you will be going to know about this, what is the importance of peace, what is the need of peace, and how can we maintain peace in our surroundings, in our society, in our international arena.
Okay, and then the last chapter is about development, various strategy of development. What do we actually mean by development? What is the difference between economic development and human development? Everything will be discussed under this chapter. So now I'm going to start with your first chapter of the first book, that is Indian Constitution at Work. So I'm going to start the first chapter. So our chapter is the name of the chapter is Constitution, Why and How. Okay, so now first of all you must be knowing what is the Constitution. Constitution is we can say it's a document in which rules of governance is written down, how the country will be governed. Each and every rule, everything is written down in the Constitution. Here you must know one more thing, that we say it's a written document, but we have some countries in which the Constitution is not in the form of a book. Like our Constitution is a written Constitution, everything is compiled in a book, and the Constitution is in the form of the book. So आज के समय में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं वो रिटन ही होते हैं, बट इट्स नॉट कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन. देयर कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी रिटन, देयर कैन नॉट बी unwritten constitution, because we have countries like UK, United Kingdom. In that country, we find that the constitution is not written down, that the provisions of the constitution are not compiled in the form of a book, है ना. बुक के फॉर्म में वो compiled नहीं है. So what is the problem, what is the situation there, that yes, it's not कि it is completely unwritten. वहाँ पर सबसे पहली चीज़, जैसे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स यू मस्ट नो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है तो फिर कैसे काम होता है ना. लिखा हुआ कुछ भी नहीं है तो कैसे काम होता है. तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कन्वेंशन. कन्वेंशन का मीन्स क्या हुआ कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं किसी भी जगह पे, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो रिटन डाउन नहीं होता, कहीं लिखा नहीं होता है, बट हैबिचुअली एवरीवन फॉलोज दैट रूल. तो ऐसे रूल्स को हम कन्वेंशन कहते हैं कि ये एक कन्वेंशन बन गया है कि ये ऐसा ही होगा, है ना. इट इज़ नाउ अ कन्वेंशन कि ये ऐसा ही होगा. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन. और ब्रिटेन में, यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह के कन्वेंशंस पे ही बेस्ड है. जो कन्वेंशंस बन गए बहुत पुराने समय से कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, तो वो उसी तरह से हो रही हैं. बट इट डज़ नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशन ओनली. देयर आर सम रिटन कंटेंट ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिटन कंटेंट भी हैं, और वो रिटन कंटेंट क्या है, जैसे कि मैग्ना कार्टा है, इस तरह के बहुत सारे रिटन कंटेंट है, बट दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. कुछ रिटन कंटेंट हैं जो कि स्कैटर्ड है, और मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो कन्वेंशंस पे होती हैं. तो दिस इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बट नाउ डेज ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. So this is about constitution and the written constitution. And now we will see what is the need of the constitution. क्यों हमें constitution की ज़रूरत पड़ती है, आखिर क्यों हमें एक रूल बुक चाहिए कंट्री को गवर्न करने के लिए. What are the need, what is the need of a constitution, why do we need a constitution. Okay.
So we can say the first requirement of the constitution is there are various groups in a society, है ना. बहुत ही अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं. अगर हम if we consider the case of our country, what we find that in our country so many diversity is there, है ना. People belonging to different religion, different language, different culture are living together. So these are the different groups who are living together, and they all have different life, different priorities. Many times their priorities make class, है ना. बहुत ही डाइवर्सिटी होता है. इतना ही नहीं, पीपल आर engaged in different types of professions also. They have different abilities, they have different hobbies, they have different taste in everything, है ना. तो डाइवर्सिटी इज एवरीवेयर. बहुत ही डाइवर्स अलग अलग लोग जो हैं वो एक साथ रह रहे हैं. सो कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ यंग है ना. तो इस तरह की जो वैरायटी हम देख रहे हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर होती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर सोसाइटी. इन एनी सोसाइटी यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी. इन आवर कंट्री this diversity is a little bit higher because of people, because of this fact that people belonging to different religion, different culture, different tradition, different cultures, language are living together. तो उसके साथ साथ और भी डाइवर्सिटीज़ है. तो इतनी सारी जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है तो वहाँ पर ये बहुत ही नेचुरल है कि क्लास होगा. देयर विल बी क्लास बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. बहुत सारे मैटर्स उठेंगे, बहुत सारी बातें उठेंगी, लाइक वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे, लाइक हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, है ना. किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या उस पर कोई लिमिटेशन होना चाहिए या लिमिट नहीं होना चाहिए. शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल. क्या ये कंपल्सरी होना चाहिए कि हर किसी को स्कूल जाना ही है. और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड. पेरेंट्स विल बी द डिसाइडिंग पीपल हु विल डिसाइड कि देयर चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल और नॉट. ये क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या नियम होने चाहिए. हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. कितना स्पेंड करें वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, है ना. शुड इट बी बिल्ड मोर पार्क्स instead of spending on security and safety, the country should spend more on parks and all. Should the group be allowed to discriminate against some of its members. कुछ members के साथ क्या discrimination allow होना चाहिए, है ना. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं. किसी भी सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ें आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे, क्लासेस आएंगे, बिकॉज हर डिफरेंट पीपल रह रहे हैं. उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी थिंकिंग, उनके व्यू पॉइंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. सो क्लास एंड डिस्प्यूट इज़ वेरी मच नेचुरल, है ना. और हर जो भी सवाल हमने किया इसका आंसर हर कोई अपने तरीके से देगा, है ना. ऐसा नहीं हो सकता है कि हर किसी का व्यू एक जैसा हो, है ना. बट दे हैव टू लिव टुगेदर. In spite of all these diversities, they have to live together, है ना. We all are dependent upon each other in various ways. We need cooperation of each other. Without the cooperation of each other, we cannot survive. The society cannot be there if cooperation is not there. So how this cooperation will be achieved? How the different groups will be able to live together peacefully? That is very important, है ना. So diversity is there still. In spite of all these diversity, we need to live together. And when we are living together, our aim is to live peacefully. So how this can be secured? So for that purpose, we need a constitution. So in order to live together, what is required? That the various groups, the diverse groups should agree on some basic rules, है ना. कुछ basic rules हों जिस पे हर कोई agree करे. If
everyone, if all the groups are not agreeing on basic rules, then on some basic rules, then they will not be able to live together peacefully, है ना. So this is very much important that the groups should agree to on some basic rules, है ना. So like suppose करो कोई भी basic rule नहीं है ना. No basic rule is there. Every individual is free to do anything, है ना, because rules are not there. So in that situation, every individual would be insecure because they would not know what members of this group could do to each other because there is no basic rule. तो एक इनसिक्योरिटी जो है वो सबके अंदर में रहेगी because the next person what he or she is going to do, no one knows. So this will cause a kind of insecurity in the mind of the people, and in this situation we find that it will be really difficult to live together, है ना. So this is very important if we want to live together, that we must have a kind of security that there are some rules which everyone will follow, है ना. And it is not only important that the rules should be there. What is important that there should be assurance that each and everyone is going to follow that rule, and if someone is not following the rules, then he or she can be punished as well. When this kind of security will be there, then we will live peacefully. हमारे माइंड में पीस होगा, है ना. So this is important that there must be some basic rules which should be publicly promulgated. Publicly promulgated means जिसको ऐसे रूल्स जिसको सभी कोई जान रहे हैं, कोई ये ना कह सके कल को कि हमें तो रूल पता ही नहीं था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी सम बेसिक रूल्स. द सेकेंड थिंग इज that it should be publicly promulgated. It means that everyone should be aware of the rules of the land, है ना. Everyone should know what is the rule of the country, so that coordination can be achieved among different groups. And this is also important. As I told you, पहला तो रूल होना चाहिए, उस रूल के बारे में सबको पता होना चाहिए, and the rules must be enforceable. Means if someone breaks the rules, there should be some provision for punishment as well, है ना. So the rules should be legally enforceable. So in this way it will give assurance to everybody that others will also follow these, because if there is no rule for no provision for punishment, then again this insecurity will be there, है ना. सिर्फ रूल होना और उसको जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका इन्फोर्समेंट होना ज़रूरी है. तभी हमारे अंदर सिक्योरिटी की एक जो फीलिंग है वो आएगी, और हम कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ मिल करके रह सकेंगे. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इन ऑर्डर टू have coordination among different and diverse groups of the society, there must be some basic rules which should be publicly promulgated and which should be legally enforceable. Okay, so what is the why do we need a constitution? The first thing is it provides a set of rules that allows for minimal coordination. So the need is for minimal coordination, and for this minimal coordination there is need of some basic rules. And what is the need that these basic rules should be publicly promulgated.
And the second thing is that it should be legally enforceable, है ना. इसको लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए और पब्लिकली प्रोमलगेटेड होना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हमने पहले फंक्शन को समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन होता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. So in the next class we will continue with this only.